Good morning, dear students. Here is exercise 4.2. It is based on construction of quadrilateral type 2. The type 2 is when two diagonals and three sides are given. The question 1. Construct the quadrilateral LIFT where LI 4 cm, IF 3 cm, TL 2.5 cm, LF 4.5 and IT is 4 cm. So you have to construct the rough diagram first. LIFT, LI 4 centimeter. This is your rough diagram. Okay, and the measurement of diagonals LF is 4.5 centimeter and IT is 4 centimeter. Okay, just look at the rough diagram. Then you have to construct the fair diagram. For constructing fair diagram, first you have to take the base LI, that is 4 centimeter. Okay, 4 centimeter. Now what is common point from the base? That is F, because the length of I to F is given and again L to F is given. Okay, so just construct an arc of 4.5 centimeter from point L, okay, and 3 centimeter from point I, okay, and where both the arcs intersect, name that point as F. Okay, F. Again, what is the common point? That is T, because the distance of L to T is given and I to T is also given. So L to T is 2.5 centimeter. So from point L, again take an arc of 2.5 centimeter, and from point I take an arc of 4 centimeter. Okay, and name the intersecting point of both the arcs as T. Okay, and at last you have to join F to T. This is your required quadrilateral LIFT, where LI is 4 centimeter, IF is 3 centimeter, IT is 4 centimeter, LF is 4.5 centimeter, and LT is 2.5 centimeter. Okay, now your next question, rhombus BEND. You have to construct a rhombus BEND where the distance of BN and DE is given. BN is 5.6 centimeter and DE is 6.5 centimeter. So you have to construct the rough diagram first. BEND. BN is 5.6 and DE is 6.5 centimeter. Okay, here only two diagonals are given. You have to construct the diagram by the help of both the diagonals. आपने दोनों diagonals के base पे construct करना है rhombus को. तो for constructing this rhombus, there are some properties of rhombus, diagonal properties of rhombus. Because the length of diagonals are given, so you have to use diagonal properties of rhombus. The one most important property of diagonal of rhombus is the diagonals are perpendicular bisector of each other. Perpendicular means diagonal जो होते हैं 90 डिग्री पर कट करते हैं और बाइसेक्ट करते हैं. बाइसेक्ट मीन्स टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड भी करते हैं. ओके, तो आपके पास दोनों डायगोनल्स हैं, तो आप किसी एक डायगोनल को आप बेस ले लो. तो लेट अस सपोज मैंने क्या लिया है बेस DE, because the distance of DE is given 6.5 centimeter. So you have to take a line segment DE of 6.5 centimeter by the help of your scale. Okay, now from point E, because the diagonals are perpendicular and bisect each other, so for constructing the perpendicular bisector, you have to take the distance more than half of the line DE. So take an arc and take an arc of both the sides of the line DE. Again, point D. By the same arc, you have to take an arc here, and again you have to take an arc just downside. Okay, and join
both the intersecting point of the arcs. आप उन दोनों आर्क्स जहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं आप उनको क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे स्केल से. ओके, नाउ just look at here, the length of this diagonal is 5.6 centimeter. Length of this diagonal is 5.6 centimeter, and I already told you the diagonals are perpendicular and bisect each other. Bisect means two equal parts में divide कर देते हैं. It means जो इसकी जो distance होगी यहाँ से इस center से, ये 5.6 का half ऊपर की तरफ हो जाएगी और 5.6 का half just नीचे की तरफ हो जाएगी. ठीक है, व्हाट इज द 5 हाफ ऑफ 5.6 सेंटीमीटर? तो 5.6 सेंटीमीटर का जो हाफ होता है दैट इज 2.8 सेंटीमीटर. तो यू हैव टू मेजर द डिस्टेंस ऑफ 2.8 सेंटीमीटर फ्रॉम द स्केल एंड टेक एन आर्क फ्रॉम द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ द लाइन्स. तो 2.8 का आर्क आप इस तरफ लोगे और 2.8 का आर्क आप नीचे की तरफ ले लोगे. ओके, और जहां पर ये दोनों आर्क्स कट कर रहे हैं, ये आर्क 2.8 सेंटीमीटर का ये आर्क हो गया और ये 2.8 सेंटीमीटर का एक आर्क हो गया जो कि हमने यहां से लिया है सेंटर मान के, बेस मान के. तो आप इन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे. दैट इज योर पॉइंट बी एंड एन, बिकॉज डी आपको पता है और आपको बी एन चाहिए. तो दिस पॉइंट इज बी एंड दिस इज एन. आप यहाँ बी रख सकते हो, यहाँ एन रख सकते हो, कहीं भी रख सकते हो उसको, वो रोम्बस सेम ही बनेगा. ओके, तो ज्वाइन बी टू डी, डी टू ई, ई टू एन एंड एन टू डी. ओके, दिस इज योर रिक्वायर्ड रोम्बस or quadrilateral BEND. Okay, thank you.